hear us. So I welcome everyone in this seminar, in this webinar, rather. This is basically on Jan Arogya Samiti. And as all of us know that under Ayushman Bharat, we are forming and establishing Jan Arogya Samitis in health sub-centers and primary health centers across the country. Now, such kind of webinar will be using very often on various. I hope no one has got any objection while we record the proceedings. Is it okay with you, Sukantji? Yes. Okay, thank you so much. So just for information that we'll be organizing such webinars time and again on various things, which is very much in line with the national health missions, especially to strengthen the communities in the country. And many of the states have been doing really some good jobs, which have to be, popularized and also sent and known to other state colleagues in the country. So this time, this is on Jan Arogya Samitis, and Odisha is one of the states where both in urban as well as in rural areas, they have formed and established the Jan Arogya Samitis across the states. And today, they will basically share how they have renamed or reconstituted their Rohit Kalyan Samitis at the primary health centers level to Jan Arogya Samitis. This seems to be very easy, but actually, when it happens, it is not so easy. So people, how they have actually done, how the state level meetings with the higher authorities were organized, and how they have taken some important decisions, and how they have changed the names of the bank accounts, etc., prepared the memorandum of associations, bylaws, etc. So they will be sharing today. And if any one of you have any kind of query, you can just write on the chat box, or in the question and sessions, you can mention that. So we'll pass it on to our esteemed panelists and speakers, and they will respond to that. And though the webinar is for just 1 hour, but for, if it is required, we can extend a little for 10-15 minutes. And as I have requested already to both the speakers to mention and speak both in English and Hindi in a mix, so that for the benefit of all the participants. So without saying much, I would like to hand over this first to our esteemed speaker, Mr. Sukant Kumar Mishra, who has been working in National Health Mission Odisha from a long time and leading the urban health program in the state of Odisha right from the year 2013 when NUHM was launched. And he has been the key person to actually initiate and strengthen the Jan Arogya Samitis in urban areas of the state. So another speaker, Dr. Sushant Kumar Nayak, also will be joining soon, who will be speaking about the rural areas. So for the time being, for now, it's all to you, Sukantji, and please share with your experiences so that all of us can be benefited. Thank you so much. Thank you. Namaskar. On behalf of State of Odisha, I welcome all the participants, and I thanks especially to PFI and for organizing such kind of wonderful discussion or webinar on very important aspect Jan Arogya Samiti, which is emerging at present time. So I should thank Dr. Smarjit and his team for organizing such kind of webinar for all the participants across the country as well as in our state. And basically, Jan Arogya Samiti, the name has been changed by Government of India. Earlier it was RKS, Rogi Kalyan Samiti was there. All the institution in part in rural, urban, it was formed under 1860 Act as Rogi Kalyan Samiti. So why this Jan Arogya Samiti concept came? Because of there is a need of participation of community. Community का भागीदारिता बढ़ाने के लिए Government of India has decided how it can be expanded to larger participation of the community, because of all the
जितने प्रोग्राम हैं सबका उपभोक्ता एंड यूजर है कम्युनिटी। सो अनलेस विल बिल्ड अप द कैपेसिटी, अनलेस विल इन्वॉल्व द कम्युनिटी, तो हमारा प्रोग्राम कभी भी सक्सेस नहीं होगा, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो। इसीलिए कम्युनिटी एंगेजमेंट, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी ओनरशिप बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोगी कल्याण समिति के नाम पर नाम को चेंज करके दे हैव बीन रिफॉर्म आज जन आरोग्य समिति। So Jan Arogya Samiti has been formed in rural area, in urban area. Rural area में क्या है? Rural area में the reconstitution has been made in PSC as well as sub center. अर्बन एरिया में क्या है? अर्बन एरिया में अर्बन पीएससी जो है पहले वो आरकेएस के नाम पर था, अभी नाउ दैट हैज बीन रिकंस्टिट्यूटेड एज जन आरोग्य समिति। सो सारी कंट्री में, सो रूरल अर्बन में अभी आप देखेंगे जितना प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी है और उसके नीचे सब सेंटर हैं, उसमें जन आरोग्य समिति करके एक कमिटी बना गया है। पहले तो वो था, पहले आरकेएस भी था, तो व्हाई दिस कंसेप्ट वाज लाइकली, उसमें क्यों उसमें गवर्नमेंट डाला है एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट। तो उसके ओनली नाम चेंज करने में कोई फायदा नहीं होता है। तो अनलेस यू विल बी लाइकली उसमें काम जो है, काम का डिफाइन करेंगे, इन्वॉल्वमेंट का एक स्कोप देंगे एंड उसको ओनरशिप डालेंगे, तो अनलेस उसको नहीं डालेंगे उसके लाइकली जो एंड यूजर हैं उसको बेनिफिट नहीं होगा। तो एंटायर प्रोग्राम अभी द प्रोग्राम वाज डिजाइन तो हाउ द कम्युनिटी विल टेक ओनरशिप। इसमें आरकेएस में जो था उसमें लॉट ऑफ चेंज हैज बीन मेड इन द जन आरोग्य समिति। अब देखेंगे अब अभी जन आरोग्य समिति इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, बिकॉज आई एम सेइंग द एक्सपीरियंस, ऑल द जन आरोग्य समिति इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और अर्बन पीएससी हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब पहले एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर में रजिस्ट्रेशन हो जाए तो उसका एक ये बन जाए, क्या एक स्टैट्यूटरी बन जाए, तो उसका जो फंक्शन जो होगा एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से फंक्शन होगा। उसका गवर्निंग बॉडी रहेगा, उसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी रहेगा, फंक्शन भी रहेगा, फाइनेंशियल पावर भी रहेगा, एवरीथिंग विल बी एज पर द गवर्नमेंट मैंडेट। तो ये हमारा जितना उड़ीसा में जितने जन आरोग्य समिति प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज में है, अर्बन में है, दैट हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी एक्ट। तो मेरे जो कलीग्स हैं सुशांत, ही विल बी शेयरिंग द सब सेंटर वाला। सब सेंटर हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी एक्ट, दैट हैज बीन इनफॉर्मल बॉडी हिसाब से चल रही है, उसी का एक्सपीरियंस मेरा कलीग भी शेयर करेंगे। सो आई विल टॉक अबाउट द रूरल अर्बन में जो पीएससी और अर्बन पीएससी हैं उसमें क्या क्या कैसे हमने फॉर्म किया। तो वी हैव बीन लाइकली कस्टमाइज किया, उसमें जो सारी गाइडलाइन को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन को हमने कस्टमाइज किया as per our state mandate. My colleague Sushant has joined. I welcome Sushant for this webinar also. तो हमने उसमें पूरा कस्टमाइज किया, कस्टमाइज करके लाइकली अर्बन पीएससी एंड पीएससी न्यू को लाइकली द गाइडलाइन हैज बीन चेंज टू जस। पहले जो आरकेएस था दैट हैज बीन रिकंस्टिट्यूटेड एज ए जन आरोग्य समिति। सो उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव जो था वी हैव डिफाइंड द ऑब्जेक्टिव एंड हाउ विल बी एक्सपांडिंग इनटू द कम्युनिटी लेवल। तो कम्युनिटी लेवल में हमने पूरा उसको डिफाइन किया। उसमें मेजर जो है इन्वॉल्वमेंट हमारा जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। तो हर कम्युनिटी का जो जन आरोग्य समिति का जो ये था पहले भी था, बट वी हैव बीन गिवन फोकस ऑन द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट बिकॉज ऑफ एवरीथिंग इज रिलेटेड टू क्वालिटी। अब देखेंगे जो क्वालिटी में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो हम पीएससी को बढ़ा नहीं पाएंगे, पीएससी को लाइकली कम्युनिटी की ओर से ले नहीं जा पाएंगे। So that we have been engaged, we have been ensured that और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए we need the participation of महिला आरोग्य समिति। तो एवरी जैस में we have उसमें गाइडलाइन में हम जन आरोग्य समिति गाइडलाइन में ऐसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप और महिला आरोग्य समिति जो था, महिला आरोग्य समिति का मेंबर्स में डाला उसमें। देन उसमें जो लाइकली आई एम कमिंग टू द स्ट्रक्चर में हमारा जो जितने ये हैं एनजीओ लोग हैं, प्राइवेट प्लेयर हैं, उसमें भी डाला है सो दैट दे कैन प्रोवाइड देयर इनपुट सपोर्ट फॉर दैट। देन ऑल्सो जितने लाइकली अदर स्टेक होल्डर्स हैं, जितने अदर डिपार्टमेंट हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड लाइकली हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसमें उसको डाला सो दैट उसमें फॉर्मेशन का टाइम में पूरा जो मेंबर्स हैं चारों तरफ मेंबर आने के बाद सो दैट कम्युनिटी दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी लाइकली सस्टेनेबिलिटी जो होगा
उसके लिए हमने मेंबर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर में डाला है उसमें। देन फंक्शन में पूरा डाला है हाउ दिस विल बी मोर कम्युनिटी फ्रेंडली। तो कम्युनिटी की ओर से जैसे रेगुलर उसका मॉनिटरिंग होगा, रेगुलर उसका ये होगा, तो एंटायर जन आरोग्य समिति रेगुलर उसको कार्यक्रम को मॉनिटर करने के लिए उसमें चेकलिस्ट बनाया। सो एवरी अर्बन पीएससी जो है और रूरल पीएससी जो है, मंथ में जन आरोग्य समिति विल मॉनिटर द प्रोग्राम एज वेल विथ डैशबोर्ड। उसमें सारी इंडिकेटर को लगा के दे विल मॉनिटर देमसेल्फ एंड इन केस दे आर स्कोरिंग मोर देन 70% दे विल बी सेइंग हमारा फैसिलिटी अच्छा है तो वी आर इन ग्रीन जोन। इन केस वी आर देयर फैसिलिटीज 70% से 50% है, they are in yellow zone. In case they are less than 50%, they'll put there they are in the red zone. तो वो खुद डिक्लेयर करेंगे, they will be declared themselves. This is because of new formation of Jan Arogya Samiti. Second thing I will be coming, because of this not the low level society, we are having state health society, we are having city health society at city level, we are having district health society at the district level. Similar kind of society has been started from top to bottom level. तो नीचे जो होगा सब सेंटर लेवल में जो होगा, सब सेंटर के बाद पीएससी को आएगा, any kind of issue has not been resolved at the sub center level, that will come to the PSC. In case PSC will not be resolved, that will come to the CSC, district and also state. That mechanism has been planned under the Jan Arogya Samiti also. Then हमने पूरी जितने एक्सपांडेड ऑफ सर्विसेज को भी डाला है उसमें। एवरी जन आरोग्य समिति विल मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज as well as expenditure of the fund, because of every jan arogya samiti is getting from government towards as a on-top fund, उसको भी fund को भी monitoring करेंगे। Then also patient satisfaction, which is one of the important area जिसको जन आरोग्य समिति देख रही है। Every day they have to take the sample, दो sample लेंगे, लेने के बाद they have to measure the performance of this patient satisfaction। उसमें जन आरोग्य समिति के हिसाब से they are monitoring the patient satisfaction also. Similarly also after engaging the community, जो community because of this I am talking about facility, then जन आरोग्य समिति का ये काम है आउटरीच में, जो यूएचएनडी होगा, बीएचएनडी ठीक टाइम में होगा, इम्यूनाइजेशन होगा, इम्यूनाइजेशन में लाइकली दे हैव टू अटेंड ऑल द बेनिफिशियरी हैज टू कॉल, लाइन लिस्टिंग होगा, एवरीथिंग हैज टू टेक केयर बाय द जन आरोग्य समिति मीटिंग। सो उसमें फैसिलिटी के साथ दे हैव टू इंश्योर दैट आउटरीच, एनसीडी कैंप आउटरीच में होगा, आरसीएस कैंप आउटरीच में होगा, जितने कैंप उसमें आउटरीच में होगा उसमें भी देख दिस पीपल दिस जन आरोग्य समिति लुक आफ्टर। उसको देखने के लिए कम्युनिटी में जो हम आशा वर्कर हैं एंड मास मेंबर्स हैं, लाइक बीएचएनसी है और गांव कल्याण समिति है, दे आर प्रोवाइडिंग द काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर मेजरिंग दिस कम्युनिटी लेवल एक्टिविटीज एट द बॉटम लेवल। Similarly also the grievance, one of the important aspect which has been looked after by जन आरोग्य समिति, पहले भी था but this has been strengthened। grievance में जो every day the grievance box has to be open and उसमें grievance register में लिखा जाएगा तो grievance कितना लाइकली ग्रीवांस क्या है, उसमें एड्रेस हुआ है नहीं हुआ है, every 7 days they have to meet, but every day grievance has to be open at the facility level. So grievance redressal has been addressed after permission of the Jan Arogya Samiti also. Then also they have to look after the cleanliness of the hospital, they have to look after the OPD services, pathology services, diagnostic services, availability of drugs, everything. So they have the Jan Arogya Samiti has to look after this in the facility level also. Then Jan Arogya Samiti has to look after the awareness part also. जितने बर्डन डिजीज बर्डन बढ़ रहा है और लाइकली द गवर्नमेंट का न्यू प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स वो जो लॉन्च कर रहे हैं उसको देखने के लिए जन आरोग्य समिति का ये काम है जो उसको कम्युनिटी के पास पहुंचाना। लाइकली जितने न्यू प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च, ये जन आरोग्य समिति का काम है कम्युनिटी किधर हाउ द कम्युनिटी विल लर्न इट एंड उसके लाइकली पर्चा बना के और माइकिंग करके और वीडियो करके वीडियो शो डाल के, so that they have to ventilate the message among the community. Next likely the जन आरोग्य समिति being played in the state, हमने जन आरोग्य समिति को भी अवार्ड रखा है। साल में जिस जन आरोग्य समिति अच्छा काम करेंगे will be providing such kind of award to जन आरोग्य समिति basing on some indicators so that they will be encourage themselves. And likely every month many facility जन आरोग्य समिति का जो चेयरपर्सन है पीएससी का जो लाइकली अच्छा काम कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल ऑफिसर, दे हैव बीन रिवार्डेड
so that likely the star of the month has been given to one of the staff of the urban PSC and PSC room, so that they being encouraged to work very fastly in that. Since January Samiti has been engaged for like Eat Right campaign, other campaign which has been initiated by the state, so that their involvement has been expanded to provide the services, and various services like the vaccination, other kind of thing being provided at the community level, being monitored and being support being provided from the Jana Arogya Samiti. So Jana Arogya Samiti is a very good concept, and it helped to drive various program of the government, as well as strengthen the community engagement at the facility level as well as the community level. This is about Jana Arogya Samiti and our experience in the state, and we have developed our own guideline for this state of Odisha, and which can be replicated across the country, no issue, because of monitoring system and guideline has been framed, and you can also refer to the guideline how we are doing it. And in case any queries, any issues, and any question from the participant, I am happy to respond. And also over to Smartji. Thank you, Sukantji. Thank you so much. The way you have, mentioned about the formation, about the strengthening, and also about some of the initiatives being taken by the Jana Arogya Samiti in the state of Odisha. It's really praiseworthy, and I'm sure you will be learning a lot from this wonderful state, and also from the next speaker. I'd like to mention over here that a lot of rounds of discussion had happened actually when the Jana Arogya Samiti concept came up at the state level in Odisha, and under the chairmanship of the chief secretary and additional chief secretary and principal secretaries of the states, like how we are going to form this JAS. Because Rohit Kalyan Samitis were already registered society, and there are a lot of kind of complications in transferring funds, in making a different kind of memorandum of associations, bylaws, etc. But the state has come up with a very quick decisions, and you have started the things very fast. So just I would like to request you to invest 2 more minutes and just very briefly please mention, Sukantji, how actually, because this is for the benefit of the other participants who do not understand or very much Hindi. So in English, can you just very briefly tell us how you have formed Jana Arogya Samitis, rather converted your Rohit Kalyan Samitis into JAS at the PHC level or at the urban primary health center level? Just 2 minutes में अगर आप बता देंगे तो. So likely there are 2 concepts for this. Once the UPSC having the RKS, which has been reconstituted as Jana Arogya Samiti, and the new urban PSC where was RKS was not being formed, and they have been formed as a Jana Arogya Samiti. So for this we have taken approval of the government, because of earlier RKS was formed. You have to dissolve one society as per the Society Registration Act 1860. In case you want to change the name, and the entire thing, because of this government managed society, you have to take permission from government. We have taken permission from government and communicated to all the register of society, like all the additional district DM, additional district magistrate, has been declared in our state as a register of the society of the district. So that the communication has been issued from the state to all the additional district, additional register, to rename the Rohit Kalyan Samiti as a Jana Arogya Samiti. For that, every urban health facility has to pass a regulation. So because of the earlier society has to change, the governing body of the RKS has passed the regulation that as per the government order, the Samiti has been reconstituted as a Jana Arogya Samiti. They passed the regulation and submitted the regulation with 2/3 majority to the concerned registered society. Then the society has been renamed as a Jana Kalyan Samiti instead of RKS. So it takes a lot of time, because of we had a lot of discussion with the government whether this existing society, how the old society will be dissolved. So the government, this law department, they have given the clearance. Because of this government managed society, so government can take a decision on that also. So after getting approval from government, we have communicated to all the district
and cities, and they have submitted the regulation from the concerned RKs, which has been renamed. Now, every society, every urban PSC or rural PSC, they got new certificate. Earlier certificate has been changed, and new certificate has been issued as a Jan Arogya Samiti because it's linked to the finance. And then we have communicated the same to the finance, likely bank also. Bank has also changed the name Arogya Samiti to Jan Arogya Samiti. So because it's linked to finance also, that has been required, Yes. which has been done in our state, and this is being changed. Finance, likely the bank account has been changed, as well as the new certificate has been issued to all the health facilities. Right. Thank you so much, Sukantji. Yeah, it was really helpful to understand actually how you have formed the JAS and how the state has taken a decision. So, I'm sorry. We have received a query from the Karnataka participants. They are trying to understand that though there is a mention in their HMIS portal, they are asking for the status of JAS and all, but unfortunately JAS has not yet been formed in the state of Karnataka. So Karnataka is one of the states which has developed the JAS guidelines long back, and these are subject to the approval of the highest body of the health system, and they are likely to get it approved very soon. And as soon as it is approved by the health commissioner, immediately those JAS will be formed and instruction will be given to all the states. मैं हिंदी में भी बीच में बोलूंगा for the sake of the benefit of the participants who are very much well versed with Hindi, but at the same time we'll be also trying to mix the language a bit. So thank you, Sukantji. Thank you so much for your kind and your deliberations. I'm sure. Just one thing. Yeah. Likely, because of this, depending upon the state has to take a call. And in case likely, my colleagues will share, Sushant will share how this JAS has been formed in the sub-center. Right. And in the sub-center, we don't have the registration. Right. So right. In the urban PSCB, because of this various things related to that, the state has to take call whether that will be registered under the Society Act or not. In our state, Government of Odisha has decided, because of earlier it was registered under Society Act. So we thought that Samiti will continue as a rename as a Jan Arogya Samiti, and for other kind of implication, government had decided the concerned RKS has to pass a regulation so that the name will be changed. So it is upon the state to take a call whether they will be taking a registration or not. And we are not, Government of India is not binding any state to likely form under Society Registration Act. Yes, thank you so much. Before we go to Dr. Sushant, just I would like to request, my colleagues who are present here and in the states as well. So I have personally visited some of the JAS, attended few of the meetings, and I've seen how they are preparing their plan of action, annual plan of actions, how they are actually reducing the grievances, how they are actually monitoring the services. So it would be a very good to see the Odisha experiences on hand. If you would like to visit Odisha, then we can facilitate a visit for you guys. So thank you so much, Sukantji. Now I would like to request Dr. Sushant Kumar Nayak. Sushantji, thank you. We welcome you in this webinar, and we would like to understand. I know that you have been working in the state of Odisha for a long time and handling the community process, and a stalwart from Odisha who knows every inch of the state, and by the virtue of working in the state from a long time, and by education he is a doctorate, and you are also kind of worked from a long time, worked in the NGOs also in the past. So with a very strong mixed experiences, and also with your this leading the things from the front and leading by demonstrations, especially in community strengthening part, and also by forming and strengthening the JAS in rural areas, would really be benefited from your deliverables. So Sushantji, it's up to you now. Floor is yours. Thank you, Swarajitji. I think it's a pleasure to be here and sharing some of the experiences or whatever we have learned from the field
with other colleagues across the country. So that's always an honor and a pleasure as well. I think Sukantji has almost explained the process of the formation of Jan Arogya Samiti in the PSCs, urban PSCs. More or less, the process was also same in case of the rural PSCs as well. Rogi Kalyan Samiti were all there, and they were being converted into Jan Arogya Samiti. But I think the most important point here was basically just shifting the mindset from Rogi Kalyan to Jana Arogya. Because I think all of us are aware that with coming up with the health and wellness centers, coming up with the comprehensive primary health care, earlier the PSC used to be like a place where some form of the services were being given, कुछ services मिलता था, कुछ नहीं मिलता था, doctors, paramedics, ये जो protocol थे पहले, ये थोड़ा थे, लेकिन उसमें फिर बहुत सारी completeness नहीं था. But now all the PSCs have been declared as health and wellness center. So इन लोगों का जो responsibility बहुत बढ़ गया. और उसी के साथ जो wellness का concept है, wellness concept, all of us are aware that wellness lies with the individual himself or herself. It is nowhere else. आप service जितने भी बढ़ा लीजिए, at the end of the day, wellness is with the person. तो ये जो mindset को change कराना और ये orientation करवाना कि from रोगी कल्याण, a shift from रोगी कल्याण to Jana Kalyan was an essence and an important part of the entire intervention of Jana Arogya Samiti in the PSC. So with the coming of all those services, 12 services in the PSCs, with the change of the registration, change in the name, and the change in the bank account and everything, PSC has Jana Kalyan Samiti, Jana Arogya Samiti has started for operating, and at the same time also some orientations have been taken off at various levels that it is all about, it is not about the patient's welfare. It is also to talk about various other activities which are linked to wellness. And as Sukantji was also mentioning, it is also important that people participate. There was a provision in the Rogi Kalyan Samiti for participation, but at the same time, the major participation, when we talk about like the wellness is wellness lies with the individual. So there are a lot of focus on bringing more people into the fold. So I think when we talked about Jana Arogya Samiti, in our state, there is a lot of focus on bringing integration. I'm explaining what is the integration. We have a strong Gaon Kalyan Samiti, which are basically the VHSNC. And VHSNC were basically strongly operating. And then we have a small system at the panchayat level where the sarpanch was taking a lead role in terms of, looking after the health services, but with no formal organization, formal platform. So then what happened, so with the sub-center Jana Arogya Samiti, the Gaon Kalyan Samiti issues, concerns were reflected, and it came to the sub-center Jana Arogya Samiti. At the same time, Jana Arogya Samiti at the sub-center level being together, the concept came to the PSC. So if you look at this arrangement, I mean, I will also stress a little upon the planning process, which is envisaged, and also stress in the capacity building program of the Jana Arogya Samiti. So if you look at making a plan, there are 4 components. Jana Arogya Samiti is mandated. We have a service, improving the service quality, service delivery quality, and health promotion activities, grievance redressal, and social accountability. These are the 4 functions. So if you look at these functions at the PSC level are not standalone. So when we talk about PSC Jana Arogya Samiti, we said that it's the PSC area as well. It's the outreach as well. So that focus has to go. Otherwise, PSC would act standalone as an institution without looking at whatever is happening in the PSC. Similarly, the sub-center Jana Arogya Samiti was told that you have to look after the health and wellness of the entire sub-center. So if you look at this holistic understanding of
taking care of the health and wellness of the entire population. That was being thrusted upon. So the planning, if you look at the planning, first the VHSNC will make the plan, the issues will come off, the issues will be discussed at the Sub-Center Jan Arogya Samiti, and with that, whatever it could be resolved at that particular level, Sub-Center level, they are all coming up to the PSC level. So PSC Jan Arogya Samiti, except the service delivery, which are protocol based, that is all there. But incorporating the needs and concerns of the community, meeting the aspirations of the people for which the Jan Arogya Samiti was being formed. So that was brought up in this process of planning. So it's like a convergent planning. So that was important. At the same time, we talked about like grievance redressal systems. It needs further strengthening as well. Like, once all those services are fully delivered at the PSC level and at the sub-center level, that still takes some time in fully operational. Like all the 12 services को पूरा operational करने में थोड़ा time लगेगा क्योंकि it's being strengthened as well. So these are all important things. At the same time, I'm bringing in the community facet of the Jan Arogya Samiti, where we expected, and also there is a training of sub-center Jan Arogya Samiti members. We have almost completed, 80% completed. There we focus much more upon the people's participation. You have to be a part of this. Otherwise, it will still remain as a institutional-based care rather than the care of the people. So in that way, we have tried to understand that the seamless integration and cooperation from the VHSNC to the PSC Jan Arogya Samiti, in between the sub-center Jan Arogya Samiti, that's like we have tried to focus on. And we have almost done the capacity building of the Jan Arogya Samiti, but it's still, I would always say that a typical understanding, envisioning needs a lot of time. It's a more software activity. So we would keep on further strengthening this in the rural areas. The rural areas also, the challenges are much more, like some inaccessible areas, HR, reaching of the services, people's perception, ill practices, traditional practices, these are all there. So on the one hand, we would like to ensure and strengthen the facility, the services being provided, and the people that actually deliver the services. At the same time, in the PSC area, Jan Arogya Samiti takes a lead role in terms of mobilizing the community for good health. So mobilizing the people for right health seeking behavior, health, and then service utilization and all that. So that is also focus. We'll still keep on working and working towards that, so that we at the end of the day, we see that actually there is actually the health and wellness really prevails among people. So there are other small activities like the PSC Jan Arogya Samiti looking after, taking care of, mentoring support to the sub-center Jan Arogya Samiti, and the sub-center Jan Arogya Samiti. Really, we made an addition in the sub-center Jan Arogya Samiti. In addition to whatever Government of India has prescribed, we have made all the VHSNC, Gaon Kalyan Samiti's office bearers are the members of sub-center Jan Arogya Samiti. So that's also like we wanted the entire representation. We are also implementing another program called Swasthya Samparka next week. So that will add value to the program. I think I have tried to focus much more upon, along with the facility, along with the services improvement, we need to really also focus on people's awareness, people's sensitization, people's mobilization in supporting the cause of establishing health and wellness centers, delivering comprehensive primary healthcare services, and at the end of the day, ensuring that health and wellness prevails among people. Thank you. Dr. Sushant, thank you so much for your wonderful deliberation. But I request you to invest 2 or 3 minutes more. One on, we have received a request from one of the participants that can you throw some more light, this on especially grievance redressal, and which is one of the major functions of the JAS, I guess, in future, and how, whether you are setting up a different kind of committee also for redressing and addressing grievances,
And second request would be, please, once again, if you can in Hindi mention a little about the how you are actually addressing various functions of JAS rather than the 4 major functions you have mentioned, including the social accountability. And if you can mention this in Hindi this time, it would be very helpful. Thank you, Samji. ये grievances वाला है जो है, see, grievances, there are many mechanisms of register the grievances. One way, it like there is a grievance register somewhere, and in every week or every fortnightly this is being looked upon, and then the grievances are addressed. And in some of the cases, like the systems are getting introduced as well, like to have a grievance box so that people can directly put their grievances and see that all these are being registered. And actually, in due course of time, I think that we have something called a Janasambad wala issue, and we are now trying to integrate from the one of the mechanism where the grievances are also like some feedback services have been taken up at the VHSNC level. We have something called a Suchana Patrika kind of thing, where people came to the PSC, received services, and this being discussed at the VHSNC level. It is being registered on a monthly basis, coming as a monthly basis. And so one is basically a structural system of getting the grievances registered. That's one. The second one is basically there are some informal ways. हमने गया था, फिर ऐसा सर्विसेज मिला या नहीं मिला, जो मिला अच्छा मिला या नहीं मिला. हाँ, हिंदी में. So those are some of the things which are important. So one, एक तो ये है कि फॉर्मली रजिस्टर किया जाए, उसको एड्रेस किया जाए. दूसरा ये कि मैंने सर्विस पाके गया है, मैं गाँव गया, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं फिर उसको डिस्कस करूं. ऐसे नहीं है कि सब ग्रीवेंसेस एक ही बार में एड्रेस हो जाएगा. और एक, as I said earlier, सारा जहां पे भी है वो सर्विस डिलीवरी का जो मैकेनिज्म है अभी स्ट्रेंथन हो रहा है. मुझे आई नॉट नो अबाउट अदर स्टेट्स, ये पूरा 12 सर्विसेज फुल फ्लेजेड डिलीवरी होने में रूरल एरिया में ये वक्त लगेगा. तो वंस यू हैव स्टेट की 12 सर्विसेज पूरा मिलता है, तो फिर वो क्वेश्चन आएगा कि फिर मेरा ओरल केयर का सर्विसेज नहीं मिल रहा है. सो और दूसरा ये है कि जो रेफरल वाला सिस्टम, मैं पहले एक सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को गया, उसके बाद फिर पीएससी गया, उसके बाद मेरा जो रेफरल होना था और हायर लेवल पे जो सेकेंडरी रेफरल, उसमें मुझे ट्रीटमेंट मिला या नहीं मिला, ये भी थोड़ा देखना है. सो वन इज, आई सेड, वन इज अ स्ट्रक्चरल ग्रीवेंस रजिस्टर एंड रिड्रेसल. One is an informal way of looking at that as well. आपने दूसरा बात जो कही है कि सोशल अकाउंटेबिलिटी वाला आज में भी एक ये प्लान भी कर रहा था, एंटाइटलमेंट ड्राइव की बात किया जाए कि आप लोगों का ये हेल्थ एंटाइटलमेंट से आप ये 12 सर्विसेज को आपको मिलना है. और ये 12 सर्विसेज हम व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, वंस वी हैव डन द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द सब सेंटर जन आरोग्य समिति, ये पूरा फिर VHSNC को जाएगा. उसके बाद ये होगा कि लाइक आपको ये सर्विसेज मिलना है, और उसके बाद फिर आता है कि क्वालिटी की बात आएगा कि आपको अगर ये 12 सर्विसेज मिलेगा, फिर आपको क्वालिटी क्या दिखाना है. ये सब जो सोशल अकाउंटेबिलिटी में एक है कि पूरा लिखा रहता है कि दीज आर ऑल सर्विसेज अवेलेबल एट द PSC, एट द सब सेंटर एंड ऑल दैट. एंड there are many sub centers which are designated as health and wellness centers, पर उसका फिर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, फुल फ्लेजर में टाइम लगेगा. तो इसमें सोशल अकाउंटेबिलिटी में ये आएगा कि एक तो एंटाइटलमेंट ड्राइव कर रहे हैं हम लोग कि पूरा सर्विसेज क्या मिलने वाले हैं, और दूसरे वाले ये होगा कि एक चेकलिस्ट करके फिर डालेंगे ये सर्विसेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. तो फिर आई थिंक on all these aspects it's a long way to go. And in terms of like accountability, ये फिर थोड़ा सिस्टम को और सर्विस डिलीवरी को स्ट्रेंथन होने दीजिए, ये फिर आ जाएगा. क्योंकि हम एक तो ये हो कि डिमांड तो बढ़ा लेंगे, लोग तो मतलब देयर आर इश्यूज, देयर आर प्रॉब्लम्स, बट एट द सेम टाइम तो सिस्टम को फिर इक्वली इक्विप होना है किसी को एड्रेस करने में. थैंक यू. I hope I could
answer whatever the query. हाँ हाँ, एकदम एकदम अच्छा से आप क्वेरी को एड्रेस किए हैं सुशांत जी. मैं आई विल कम बैक टू सुकांत जी आल्सो बिकॉज देयर इज a little query for urban areas, but before that सुशांत जी, उड़ीसा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव अभी लिया है जो कि आप जिसका 6th and 7th को एक आप जो स्टेट लेवल लॉन्च कर रहे हैं रूरल एरियाज के लिए, खास करके जहां पे आप लोकल जो आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलकर सीपीएच को स्ट्रेंथन कर रहे हैं. प्राय लगभग 40 ऐसे पीएचसीज में जो कि बहुत ही फार ऑफ एरियाज में है, डिफिकल्ट जोन में है. तो ये एक बहुत अच्छा सुनहरा एक अवसर होगा और ये हम लोग देखेंगे कि कैसे इस एरिया में हम लोग इसको और अच्छा से स्ट्रेंथन करके सोशल अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं. तो उसके बाद में हम आएंगे आपके पास, आप तो बने रहिएगा. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशांत जी के ऊपर. सुशांत जी, जैसे कि हम लोग जानते हैं रूरल एरिया में सुशांत जी का एक बेनिफिट है कि उनके पास हेल्थ सब सेंटर है और हेल्थ सब सेंटर में हमारा जैस फॉर्म हो जाएगा. तो काफी ज्यादा वो काफी उनका प्रॉक्सिमिटी टुवर्ड्स बीएचएसएनसी इज वेरी लेस. तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से मेंटर कर सकते हैं. लेकिन अर्बन एरिया में हम देख रहे हैं कि 50,000 पॉपुलेशन में हमारे अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और जहाँ पे जैस बने हुए हैं, और उसके बाद हमारा डायरेक्ट है मास, ठीक है, जो कि रफली अराउंड 500 सम पॉपुलेशन में होते हैं. तो हम कैसे उससे कनेक्ट करेंगे, कैसे मेंटर करेंगे, या जैसे सोशल अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस हो या सर्विस डिलीवरी स्ट्रेंथनिंग हो या हेल्थ प्रमोशन हो. तो अर्बन एरिया के लिए आपका क्या प्लान है, अगर आप थोड़ा सा बताएंगे हमें. तो both please mix it Hindi and English as well because we have wide range of participants across from the country. So what do you, Sukant ji? Right, thank you. Prior to response your question, उसके पहले दो क्वेश्चन पार्टिसिपेंट की ओर से हैं. एक है, can we start the JAS in PPP mode urban SWC? Yes, you can start the JAS because of JAS is not PPP and non-PPP. This is a institutional based organization. वो एक इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है. आप आइदर पीपी मोड में हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मोड में हो, आप वहां जांच कर पाएंगे. देयर इज नो सच डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन फ्रॉम जीआई जहां पीपीपी है और नहीं होगा. हर इंस्टीट्यूशन में अब जांच ही होगा. एंड अभी जो है, अभी 15th फाइनेंस कमीशन में, जस्ट आई एम एडिंग इट, 15th फाइनेंस कमीशन में अभी जो अर्बन एसडब्ल्यूसी सैंक्शन हुआ है वहां भी जांच होगा. So that is depending upon the state and who composition of the JAS in the urban SWC. क्योंकि अर्बन पीएससी एक बड़ा वाला इंस्टीट्यूशन है which is covering 50,000 पॉपुलेशन. जो अर्बन एसडब्ल्यूसी है नीचे है which is covering 15 से 20,000 पॉपुलेशन. उसमें कंपोजिशन कैसा होगा, स्टेट हैज टू टेक ए कॉल बिकॉज ऑफ इन अ स्टेट वी हैव डिफाइंड इट डिफरेंटली. तो हर स्टेट का कुछ कुछ ये होता है, मैंने प्लान होता है, उसका हिसाब से वो करेंगे. सेकेंड इशू, एक क्वेश्चन आया है लाइकली ग्रीवांस कमेटी. तो हर ग्रीवांस कमेटी वो मेडिकल ऑफिसर का चेयरपर्सनशिप में किया जाएगा एवरी हेल्थ फैसिलिटीज में. उसमें मेंबर कौन होंगे, आप यू कैन टेक सम मेंबर्स फ्रॉम योर पीएससी और आपका यूपीएससी. उसमें आप फार्मेसी को ले पाएंगे, आप स्टाफ नर्स को ले पाएंगे. उसके साथ कम्युनिटी में जो आरकेएस, जो जनआरोग्य समिति का जो स्टैंडर्ड मेंबर है, जैसे मास मेंबर है, जैसे पीआरआई का अर्बन लोकल बॉडी जो पीआरआई का मेंबर है, और जैसे आपका अदर डिपार्टमेंट का स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा, और आप हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, आरडी डिपार्टमेंट का, उसका जो मेंबर है उसमें भी आप ले पाएंगे. तो मैक्सिमम मेंबर शुड नॉट बी 4 and 5 सो दैट बिकॉज अब ज्यादा मेंबर ले लेंगे तो अदरवाइज अगेन वो जास भी बन जाएगा. So the limited members should not be more than 5, so that they can sit a monthly एक बैठेंगे, ग्रीवांस को पूरा एड्रेस करेंगे. बट the entire in our state every day we are having the mandate, हमारा every day ग्रीवांस ओपन रहेगा, जो ग्रीवांस रजिस्टर मेंटेन होगा. But they can sit a fortnight, they can sit a weekly or monthly different issue. But every day ग्रीवांस will open and that will be addressed at the मेडिकल ऑफिसर लेवल. उसमें बाद में मीटिंग बैठ के उसको वैलिडेट करेंगे. तो राइट टू योर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस कम्युनिटी का जो है, आप उड़ीसा का अर्बन बारे में मैं बता रहा हूँ. हमारे जो अर्बन पीएससी हैं वो 50,000 पॉपुलेशन कवर कर रहे हैं. उसके नीचे एवरी अर्बन पीएससी जो 50,000 में है उसमें करीब 5-6 वार्ड हैं.
वार्ड इज द लोएस्ट डेमोग्राफिक यूनिट ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज। वार्ड सबसे नीचे उसका यूनिट है, उसके नीचे कोई अर्बन लोकल बॉडीज का यूनिट नहीं है। जिसे रूरल एरिया में उसमें आप ब्लॉक हैं, उसमें ब्लॉक पंचायत है, उसके नीचे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के नीचे आपका रेवेन्यू विलेज है, रेवेन्यू विलेज के नीचे hamlet विलेज है, इसे सिटी के नीचे वार्ड है। तो वार्ड, एवरी वार्ड हमारा अर्बन एरिया में हमने एक वार्ड कल्याण समिति डाला रखा है। तो वार्ड कल्याण समिति हेडेड बाय द वार्ड कॉर्पोरेटर, काउंसिलर जो है वो उसका चेयरपर्सन है। उसमें दैट इज ए कन्वर्जेंट प्लेटफॉर्म उसमें बना है। स्कूल टीचर्स उसमें मेंबर हैं, ICDS का सुपरवाइजर मेंबर है, एंड HOD डिपार्टमेंट का कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर भी मेंबर है उसमें। NGO का रिप्रेजेंटेटिव जो काम कर रहे हैं उधर वो भी मेंबर है। जो महिला आरोग्य समिति उसी एरिया वार्ड में है उसका भी मेंबर है। प्लस जो PhD जो पानी सप्लाई कर रहे हैं उसका जूनियर इंजीनियर उसका मेंबर है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जूनियर इंजीनियर भी मेंबर है। तो दैट इज द कन्वर्जेंट प्लेटफॉर्म। तो they are the people who support the urban PSC for any kind of issues। उसके नीचे क्या है, उसके नीचे मास है, महिला आरोग्य समिति जो स्लम एरिया में है। नॉन स्लम एरिया में भी हमारा इम्प्लीमेंटेशन है, उड़ीसा में शुरुआत किया है पार्टनरशिप विद रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी। जहां सोसाइटी बन रही है रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी अर्बन एरिया में, वी आर टेकिंग पार्टनरिंग विद देम। सो उसमें एवरीथिंग लाइक नॉन स्लम एरिया में रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, स्लम एरिया में मास, देन वार्ड, देन अर्बन PSC। तो मान लीजिए कोई किसी का प्रोग्राम, हमारा इम्यूनाइजेशन का ड्राइव प्रोग्राम कर रहे हैं, स्पेशल इम्यूनाइजेशन रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी में, नॉन स्लम एरिया में, वी आर टेकिंग पार्टनरिंग विद देम। वी टेक देयर रूम आल्सो। उसमें जो कम्युनिटी सेंटर है रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी उसके साथ कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, UHND भी उधर कर रहे हैं, NCD कैंप भी उसको डाला रखा है। तो एंटायर support has been taken from the non-slum area with the partner with resident society। So उसके नीचे जो issues हैं from ground level issue, both slum and non-slum, नीचे से आता है वार्ड को आता है, वार्ड से हमारा अर्बन PSC को जाता है। सिमिलरली एनी काइंड ऑफ बॉटम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप बहुत जा रहा है। जो टॉप कोई डिसीजन आपको पास करना है कम्युनिटी के पास, सो वी आर पासिंग विद द वार्ड कल्याण समिति, देन मास, देन आल्सो रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी, सो दैट मेनी इश्यूज हैज बीन रिजॉल्व। कोई इश्यूज रिजल्ट नीचे नहीं हो रहा है वो issue. So meanwhile, while we comes back, can we just go to Dr. Sushant? Are you online, Sushant ji? Yeah, yes. Yeah. So participants have this. They want some clarifications, or they want some kind of this solutions on 2 or 3 aspects largely. Yeah. Sushant ji, I'll come back to you. Just please hold on. So one is about the untied fund. For example, the HWCs which are actually running through PPP mode, so they are also receiving untied funds. So how actually those agreement is being made, or how those funds can be utilized? Can you just, that is number one. And number 2 is mentoring role of JAS. You know this, if you can mention a little about mentoring role of JAS to the BHSMCs. So that would be very helpful for the participants to understand how we are doing this in the state of Odisha. Over to you, please. Yes, regarding the untied fund utilization, we have already said that the plan which is made by Jan Arogya Samiti, थोड़ा हिंदी में बोलिएगा इसको। हाँ, जो प्लान बना है जन आरोग्य समिति का, वो बेसिस है पूरा फंड यूटिलाइजेशन का। ये प्रोसेस जो होगा, सब सेंटर, चाहे सब सेंटर हो या PSC हो, ये कंसल्टेटिव प्रोसेस करके आप लोगों को प्लान बनाना है। और प्लान में आपको 2-3 चीज देखना है कि उसमें एक तो हमने बताया कि सर्विस डिलीवरी का क्वालिटी जो है, एक तो सिस्टम में जाता है, और सिस्टम में बहुत सारी मतलब ड्रग्स, डायग्नोस्टिक, एवरीथिंग इज कमिंग अप। उसमें आप क्या वैल्यू एडिशन करेंगे फ्रॉम द जन आरोग्य समिति फंड। दूसरा बात रहा कि हेल्थ प्रमोशन वाला एक जो प्लानिंग में बन के आएगा कि यस,
ये पीएससी में और ये सब सेंटर में ये हेल्थ इशू बहुत है। तो इसके ऊपर कौन सी इशू के ऊपर हम लोगों ने कुछ हेल्थ प्रमोशन वाला एक्टिविटी करे, वेलनेस का एक्टिविटी करे या सर्टेन स्पेसिफिक डिजीज के ऊपर एक्टिविटी करे। उसमें फिर सब सेंटर वाला में VHSNC भी आ जाएगा, वो भी अपने लेवल पे करेंगे, सब सेंटर अपने लेवल पे करेंगे। और तीसरा ये है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल के ऊपर हमको क्या क्या करना है और सोशल अकाउंटेबिलिटी को क्या क्या करना है। ये कंसल्टेटिव प्रोसेस करके आपको प्लान बनाना है सब सेंटर का और पीएससी का। एक बार ये प्लान बन गया, ये अप्रूवल हो गया, प्लान का फॉर्मेट है, आपको फंड्स इतना खर्च करना है, इसी ऐसे एक्टिविटी में करना है, और ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये टाइमलाइन है। एक हमारा फोकस ये है कि पहले अच्छा प्लान बने, एक इफेक्टिव प्लान बने। वो प्लान बनने से आपका काम तो मतलब पूरा 50% खत्म मतलब हो जाता है। बाकी प्लान बनने के बाद उसका मॉनिटरिंग जो है वेरियस लेवल पे, मान लीजिए CHO जो प्लान बनाएगा, CHO सब सेंटर पे, वो जन आरोग्य समिति वाला प्लान वो फिर मॉनिटर होगा, मंथली मीटिंग होगा, ये सब होगा। सिमिलरली PSC लेवल पे जो जन आरोग्य समिति बनेगा है, वो उसका जो प्लान बनेगा वो अप्रूवल होने के बाद वो फिर होगा। हमने भी क्वार्टरली वाला मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया है कि हर क्वार्टर में रिव्यू हो, फिर रिन्यू हो, फिर नया एक्टिविटी में ऐड हो। ये दिस बिकम्स ए कंटिन्यूड प्रोसेस। इसमें ये देखना है कि अनटैप्ड फंड यूटिलाइजेशन हमको देखना है कि वो जो जिसमें ऑलरेडी प्रोविजन है अनटैप्ड फंड जन आरोग्य समिति, उसमें डुप्लीकेशन ना हो और थोड़ा इफेक्टिवली। हमने तो ये बोला है मतलब ये सब सेंटर वाले और इसको बोले हैं कि भाई ये पहले आप रख लो, ये आपका फंड है, पहले सब जो फंड्स अवेलेबल है उसको खर्च करो, बाकी जो बनता है मतलब बचता है आप एक्सक्लूसिव प्लान करके फिर इसके ऊपर खर्च करो। ये है एक जो अनटैप्ड फंड यूटिलाइजेशन वाला। तो इट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग, एक कंसल्टेटिव प्लानिंग बने, पार्टिसिपेटरी प्लान बने, उसी के हिसाब से खर्च हो, क्वार्टरली मॉनिटर हो और रिव्यू हो। और आपने दूसरा बात जो बोले कि मेंटरिंग रोल एक ये है कि एक CHO सब सेंटर वाला मैं बात कर रहा हूँ। सब सेंटर में जो जन आरोग्य समिति का मोस्टली CHO देख रहे हैं, उनका एक मेंटरिंग मैकेनिज्म है। एक तो ये सर्विसेज के ऊपर मैकेनिज्म है, दूसरा ये कि हम लोगों ने उनको जो ट्रेनिंग दे के रखे है, पहले उन्होंने काम शुरू किया है अभी सब सेंटर वाले में, और उनका जो ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर है एंड आवर असिस्टेंट मैनेजर कम्युनिटी प्रोसेस, वो जो दोनों लेवल पे मेंटरिंग है। अब वी आल्सो लुकिंग एट फर्दर स्ट्रेंथनिंग द मेंटरिंग रोल एज वेल, ये थोड़ा हमको देखेंगे। और PSC वाले में PSC will be monitored by the block, there have been capacity building processes as well, reporting system. So I think ये mentoring एक बार हमको ये है कि एक बार प्लान बन के फिर जो स्टार्टेड एक्सपेंडिचर हो गया, और थोड़ा जो इस साल और दूसरे साल अगले साल में भी जो थोड़ा विजन को बढ़ाना है कि हाउ टू रियली मेक पीपल्स पार्टिसिपेशन, हाउ टू फोकस अबाउट वेलनेस, how to not to go with the kind of traditional things which are already happening in रोगी कल्याण समिति। ये थोड़ा मतलब मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे वो इन्वॉल्वमेंट लाना है। एक बार ये आ गया फिर अभी आई थिंक ऑल दीज थिंग्स विल बी क्लियर। सो इट इज ऑलवेज एन इवॉल्विंग प्रोसेस, so a lot of scope for strengthening, a lot of things to do as well. Yeah, thank you so much, Sushantji. I don't want to repeat what you have already said. I hope all the participants understand, especially for whom we have made this, come up with such kind of queries. Now, one very important query is coming up from the state of Karnataka. They're asking that whether governing body, this question is to Sukantji. Sukantji, please respond to this question. Whether the existing governing body and the executive committee of Rogi Kalyan Samiti still exist in JAS, or you are just changing, or you are just reconstituting, or you are just expanding in the state of Odisha? They would like to understand this. Likely, because of we have modified the entire memorandum and bylaw of Rogi Kalyan Samiti. Yeah. Our state government has approved the new bylaw and society registration act के हिसाब से हमारा जो बाइलॉ था, जो मेमोरेंडम एंड बाइलॉ था, दिस हैज बीन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, रिवाइज्ड बाय गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट.
So accordingly, we have modified and we have added some members in governing body as well as executive body. Because of in the Jan Arogya Samiti, we tried to expand more community members should be there. So that community का जो representation हो उसमें अच्छा like more community representation should be there. According to question है, this is up to state to take a call. So for our state, we have added many members in the RKS governing body as well as in the executive committee. So that your state has to take a call whether you want to continue with same members or you want to add some members which will be beneficial for the facility as well as community services. मेरे दोस्त सुशांत जी बताया था जो likely this depending upon us, हमने किस तरफ हम किसी को मोबिलाइज करना चाहेंगे, that is the call have to take by the respective urban health facility, respective city or district. Second question, likely fund, receive of fund. Yes, because of that has been registered under Society Act. So every Jan Arogya Samiti are entitled to receive the fund from external fund also, no issue. But in case CSR fund and district fund from the other society, they can receive the fund and utilize the same as per the Society Registration Act. There is a no issue. And also we are in our state also, some of the fund being received from our urban local bodies for a different kind of activities which has been managed by our urban PSC, and the separate UC being submitted to respective department, respective agency for utilization of that grant also. And every month JAS meeting is no. Actually, for in our state, it has been decided JAS governing body has to sit twice in a year. 6 महीने में एक बार बैठेगा, and the executive body will sit likely twice in a month. 6 meeting in a year for executive body, 2 meeting for governing body. So that has been as per the current bylaw that has been approved by government. So 6 meeting होगा executive committee का and 2 meeting होगा governing body का. So that is there. Then I'll be sharing something regarding this. What is the crease of this JAS? Up every monthly meeting नहीं होगा, so you can't take any kind of decision. So every time the meeting has to be set regularly, and every हमने सारी JAS के लिए एक template बना रखा है. तो जब monthly meeting होगा, they will be share the presentation, so that everybody will be aware about what is the OPD status, what is the quality status, what is the infection control status, what is the HR status, what is the fund utilization status, what is the response from the community. Because of every urban PSC or rural PSC के लिए दो monthly likely महिला आरोग्य समिति का they will visit the urban health facility and community monitoring का report share करेंगे. तो उसमें क्या share किया है, and then also patient feedback क्या है, तो उसमें template के हिसाब से there will be a presentation in the meeting, so that there will be likely जब मेरे colleague बता रहा था, so that the community they just will take a decision in the critical issues. जब आप issue नहीं आएगा तो decision लेने में problem होगा. इसीलिए we have form a standard template for across the state. Then next thing is, and JAS के लिए आप planning very important है. आप ठीक तरीके से planning नहीं करेंगे तो आपको कहीं भी you can't implement anything. So there is a concurrent plan based on the issues. जैसे मेरे कलीग बता रहे थे, मान लीजिए कोई सब सेंटर एरिया में अब रेगुलर एपिडेमिक हो रहा है, तो लाइकली उसके लिए आपका सेपरेट प्लान बनाना पड़ेगा. कोई एरिया में आपका ज्यादा तक ये है ना, लाइकली मस्कीटो का प्रॉब्लम है, जो मलेरिया ज्यादा है, तो उसी एपीआई के हिसाब से यू हैव टू प्रिपेयर द सेपरेट प्लान फॉर दैट सब सेंटर आल्सो. तो आपकी एरिया मान लीजिए पीएससी, विद इन द पीएससी देयर आर सम ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ पॉकेट्स है, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज बर्डन है, उसको लेके भी आपको प्लान बनाना पड़ेगा, सो दैट यू कैन एड्रेस डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज बर्डन एट द फैसिलिटी लेवल. उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. लास्ट पार्ट आल्सो दिस लाइकली आपका क्वालिटी, जो क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट सस्टेन द मोमेंटम. अब जैसे हमारा अर्बन बता रहा था, अर्बन में वी गॉट अराउंड 20 फैसिलिटी गॉट एनक्वा सर्टिफिकेशन ऑलरेडी, 22-23 फैसिलिटीज आर ऑन द प्रोसेस. तो क्वालिटी को कन्वर्ट करेंगे तो ज्यादा का इन्वायरमेंट बढ़ेगा, यू कैन गेट मोर रिसोर्सेस.
Once your PSC or urban PSC got INQA certification, Government of India की ओर से you will get more resources. आपका resources ज़्यादा आएगा, so the urban Jan Arogya Samiti will prepare a very good plan to address various small initiative. तो Thank ये you. Thank you so much, Sukhanji. Thank you so much. Actually, just in a minute, I would like to share with all the participants that the state of Odisha had developed a memorandum of association and bylaws at the central level in the state, and with the signature of the mission director, state mission director, it was sent to all the districts and cities, DHS, and they followed the single kind of memorandum and bylaws, and it has a very expanded membership in the jazz committees. So different, from different departments and all, they have expanded the membership. It's not the similar GB or similar EC or the general membership of the jazz, but by following the national level guideline, they are customized. And it's a wonderful kind of, if you want, they can share with you all in the states. That is number one. Number two is, so far as the resource generation is concerned, if I don't know whether my Sikkim colleagues are here present, I have seen in some of the jazz, the PhDs, they have really done wonderful in generating the resources in cash as well as in kind. So obviously, as Sukhanji said, that the resources and additional resources are always helpful. See, 50,000 at the subcenter level, 1,25,000 at PhD level, is not sufficient to actually manage a facility or take care of all the social accountability, health promotion activities. So it's always, the welcoming that funds are generated, and as a registered body, they can always go for fund generation. So those are really, this is a wonderful kind of session, and this thing, deliberations we have had during this time. If any of the participants or any of the, officials from the state would like to ask anything, share anything with us, you are most welcome. We'll also have some more time with the permission of the speakers, of course, if they are ready for devoting 5-10 minutes extra. So we'll wait for that. Yes, Susanji? Yes. Okay. So we'll wait for some more time for some more queries. I think most of the queries are similar or generic in nature. Likely one query, can the two committee be one? For urban PSC or PSC new, as it is registered under Society Act, we have to other the act norms. So as per the Society Registration Act, the society should have two committee, governing body and executive body. So in this context, if you are going for the registration, you have to have two society, so two committees. If you are not going for the any kind of registration, you can have one committee. Likely like a sub center, we are having one committee. My colleagues Susanti will share that. And in case you are having, you will be going for registration, you should have two committee. So there is a hand raised. Can I just request our esteemed participant to speak? Or Shilpa Lemke. This is Shilpa Lemke. I would like to speak something or share something or ask something, madam. Okay, so I think it's done. So any of the participants would like to ask or share something, because our speakers are there, still there for some more time. Hello. Yeah, hello. Yes, Shilpa ji. Hello. Yeah. हेलो नमस्ते सर. या नमस्ते. नमस्ते सर. मैं महाराष्ट्र से हूँ, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से आरकेएस कोऑर्डिनेटर बोल रही हूँ मैं. सर हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जन आरोग्य समिति की एक ही मीटिंग जो है एवरी मंथ के लिए कंडक्ट करने के लिए बोला है. तो अभी सर ने जो बोला कि गवर्निंग 6 मंथ में एक बार और कार्यकारी जो है 2 मंथ्स में एक बार, यानी ईयरली 6 मीटिंग एग्जीक्यूटिव के और गवर्निंग के 2 मीटिंग्स, ये हमारे आरकेएस के गाइडलाइंस के हिसाब से चल रहे थे. लेकिन अभी जास में अभी चेंजेस करने के लिए बोले हैं.
तो उड़ीसा के जो रूल्स है उसके हिसाब से तो चेंजेस सर ने बोला कि 2 मीटिंग वैसे ही कंडक्ट करनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन डाला था कि एवरी मंथ कंपलसरी है क्या जास की मीटिंग कंडक्ट करने के लिए? Yeah, Sukant, would you like to respond to this question? हाँ. Or please. So, ma'am, ये है, this is regarding this bylaw, तो which has been likely जो government की government of your government has approved to which bylaw, तो accordingly आपको act करना पड़ेगा. Likely our state government has customized, उसमें जो national guideline था उसको हमने customize किया. कस्टमाइज करके हमने पीएससी और अर्बन पीएससी में वो गाइडलाइन मेमोरेंडम जो अप्रूव किया, उसमें गवर्निंग बॉडी मीटिंग 2 बार होगा साल में एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी 6 बार होगा. एवरी 2 मंथ्स देयर विल बी एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग. तो उसके हिसाब से हमने गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया. अकॉर्डिंगली वी हैव कम्युनिकेटेड टू सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो ने रजिस्टर जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ उसके हिसाब से दे हैव टू रिपोर्ट. अब तो दिस कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन आपका स्टेट. तो आपका स्टेट उसको कस्टमाइज करके आप एक बार एवरी मंथ में करेंगे तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट टू टेक ए कॉल. तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू अपलोड इन द डाटा इन द डब्ल्यूसी पोर्टल. उसमें कोई प्रॉब्लम या तो शिल्पा जी आप समझ गई होंगी, क्योंकि स्टेट ये हेल्थ इज ऑलवेज अ स्टेट सब्जेक्ट, और ईसी का जो मीटिंग हो या जीबी का जो मीटिंग हो, जीबी का मीटिंग फॉर एग्जांपल आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बिकॉज दे आर द वेरी बिजी काइंड ऑफ मेंबर्स and it's not required also because there is a policy making body. Then EC का जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो कि रेगुलर रूटीन एक्टिविटीज के अप्रूवल और कोई डिसीजंस लेना है, जीबी को कोई फॉरवर्ड करना है, तो उनका मीटिंग का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए. बट एज पर द अगर मान लीजिए स्टेट में आपका गाइडलाइन को आप मॉडिफाई करते हैं, कस्टमाइज करते हैं, या उसी के अनुसार आप मेमोरेंडम बनाते हैं, बायलॉज बनाते हैं, तो वहां पे जैसे जितने नंबर्स रहेंगे आप उसको वैसे ही फॉलो करेंगे. जी okay, ठीक है. Any other participants would like to ask anything? admin कोई है? अच्छा, we can see a TD admin raised their hand. So can you just unmute yourself and raise your query or ask the question? TD-admin. Queries is registration compulsory. Sir, good evening, sir. Yeah, good evening. Sir, I am Srinivas, sir. This is from Telangana, sir. Okay. Just as previous speaker was telling that registration of societies. So, is it mandatory, sir, to change, or registration compulsory chahiye ya nahi hai, sir? Only name change will do. Sushant ji, would you like to respond to this question? See, for the change in the bank account, you need to change the name. Sir. And for change करने के लिए फिर आपको एक रेजोल्यूशन करके देना पड़ेगा. Okay. और बैंक नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा. वो बैंक अकाउंट में now the signatories will be changed. Okay, तो बैंक वही रिसीव करेगा कि आप यहाँ पे रेजोल्यूशन करके दे, और फिर वो रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन को चेंज करवाना है. Because there will be different members, there will be different members of the committee. Okay, sir. इसके लिए उसको चेंज करना है. So that means we have to go for again re-registration of this one, sir. Already जो existing जो society है, SDS जो है अपना JAS. जांच का तो सोसाइटी नहीं होगा ना, आपका रोगी कल्याण समिति होगा. ये सर रोगी कल्याण समिति जो ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है, so we are changing the name to JAS, sir. हाँ, वो फिर चेंज करवाना पड़ेगा आपको. हाँ, तो फिर again we have to re-register. That's what my doubt, sir. हाँ, वो रोगी कल्याण समिति के जगह पे फिर जन आरोग्य समिति बनाना है. May I respond to our esteemed participant from Telangana? What is your good name, sir? Sir, I am Srinivas, sir. I am consultant SWC. Okay. Very nice to hear your voice, Mr. Srinivas. Thank you. Just I can tell you how the Odisha government has taken a decision, how they have done it. Basically, the earlier Rohingya Samitis at the primary health center level, with a state order, they have customized the memorandum of association of Rohingya Samitis, and as Janariglo Samiti, they have reconstituted that, and there every district they have the additional district register.
So additional district registers were approached by the existing Rohit Kalyan Samiti with the resolution that they are going to rename their Rohit Kalyan Samiti as JAS with the same registration. Now the registration is not separate. The same registration, they expanded the membership, they changed the name of the bank accounts, and also they have changed the bylaws and memorandum of associations of the Rohit Kalyan Samitis. So if I am not correct, Sukantji, you can respond. Over to Sukantji. Right. In case you are applying for a re-registration also, the registered authority will issue another certificate referring to previous one also. In that registration certificate, they will refer the previous one also. So that will be modified and new numbers may be allotted to the concerned society. Because of my colleague Sushantji was saying, it is linked to various states. Bank will be asking for the change. Bank cannot accept your only regulation. Whenever you are changing the name, bank will be asking the likely legal document. So for legal document, you have to produce the new name, which will पहले तो जो था रोगी कल्याण समिति के नाम पर था. And bank will ask, भाई आप तो चेंज कर रहे हैं जनवार की समिति में, आप जनवार की समिति का मेरे को डॉक्यूमेंट दीजिए. जनवार की समिति का आप again you have to submit the registration certificate. In that case, we had a very intensive discussion at the state. Government has decided we'll go for the re-registration. Many places they have mentioned the previous registration number and the old registration. The state has to take on. I think this is not big issue, but the state has to understand the gravity of the situation and issue one order which can be implemented at the ground level. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Mr. Srinivas, I think your query is clarified. So, sir, yes, sir. One more small query, sir. Yeah. In lines with आपने जिस तरह भी बताया, sir. We in Telangana also going to do same thing, sir. We are going to issue a government order. Yes. Regarding formation of JAS. So, will that order be sufficient to in the banks to change the nomenclature? No, sir. Again, the statutory order you have issued to the district and cities, and every RKS meeting they have to pass the regulation. Earlier I was explained the regulation has to pass. After the regulation, they have to produce the document to the concerned registered authority for changing of the name. Okay. Unless they will be changing of the regulation will not be passed by the concerned RKS, and it will be very difficult to change by the concerned likely registered society. So based on the instruction of the state, respective CHOs or CMHO or DHO of your district will facilitate the process of renaming or re-registering the Rohit Kalyan Samitis by coordinating with the district level registrar of the society registration department or act. So that is the process actually Odisha has followed. And I think Mr. Srinivas, you are also going to follow the same process. Yeah, same thing, sir. Same thing. Okay. So thank you so much. Any other participants would like to? One last question we can take because the time we are really running short of time now. One last question or last query from any other participant can raise the hand. No question. So I think there is no question, and from the core of our heart, we are really thankful to each and every participants of this organization of this webinar. And since this is one of the first Samvad we are organizing from the AGCA Secretariat through online, so we are also quite happier to see the enthusiasm of the participants, and also we could see the need of this need for understanding the subject matter, that is generic samitis, for which many of the states are actually really struggling with. And we are also thankful to Dr. Shukant Kumar Nayak and Mr. Shukant Kumar Mishra, who are the stalwarts of rural and urban community processes and the strengthened the community process system in the state of Odisha, which has been example to the rest of the country. And we keep saying that Odisha has demonstrated so many good practices. And also in this forum also we have observed that. And we would also like to thank you so much, Sushantji and Sukantji, and my colleagues from the Youth Secretariat, and everyone around. And hopefully, very soon we are going to organize another webinar within a month or two on a different interesting subject with a different state speakers on a very, this learning
good learning working experiences from the state or district. So thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Namaskar. Namaskar.